Yes. Good evening, all of you. Let us start with the MCQs based on the derivative and integration. Okay. चलो ठीक है. So जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, so applications of derivative and integration we are about to see here. ठीक है. तो अभी देखो यहाँ पे लिख से see this second question. Just read it once. If y is equal to log of x, then find dy by dx. Yes, it's very simple question. Simply we have to find out the derivative of log of x. Basically y is given to be equal to log of x to the base e, and already we are having the formula in derivatives as we have just seen last time, that derivative of log of x to the base e is always equal to 1 upon x. करेक्ट है. तो ये फॉर्मूला हमारे पास है. तो इसलिए यहाँ पे अगर y is equal to log of x to the base e है, तो उस केस में फिर हमारा dy by dx क्या बनेगा? So simply it will be 1 upon x. That's it. So this is going to be actually the answer, which is going to be there in this option number 3 here. Okay. तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, तो वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है. Yes. Try this sixth question here. That is also based on derivative only. Okay. Y is equal to x square plus 5x plus 10. Okay. Then value of dy by dx. Have you get that? So देखो यहाँ पे simply हमको डेरिवेटिव निकालना है, मतलब dy by dx जोड़ना है तीनों टर्म्स को. तो यहाँ पे आ जाएगा dy by dx of x square plus dy by dx of 5x. अरे डेरिवेटिव शिकवते तो नाही येते मला ते. अरे बातें मत करो रे. आताशी इंजिनिअरिंग मध्ये फायनल इयर मध्ये शिकलोय. Yes. And plus derivative of 10, which is actually going to be 0. तो अभी देखो यहाँ पे x square का डेरिवेटिव रहेगा 2x प्लस यहाँ पे 5x का डेरिवेटिव रहेगा सिंपली 5, क्योंकि 5 इज कांस्टेंट, कैन बी टेकन आउट, एंड x का डेरिवेटिव 1 एंड 10 का डेरिवेटिव 0. तो इससे हमको ये मिलता है 2x plus 5 as a final, which is already there in this option 2 here. Okay, so 2 will be the correct option. Yes. और यहाँ पे देखो एक्चुअली ये सारे जो क्वेश्चंस है, तो ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स के अंदर के हैं. ये हम सॉल्व करेंगे सभी एक एक करके. ठीक है. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इन द गिवन प्लॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द हाईएस्ट पॉजिटिव स्लोप. अभी इसमें से किसका स्लोप पॉजिटिव है और हाईएस्ट है, तो वो हमको ढूंढ के निकालना है. इफ यू सी हियर, अगर ये डायग्राम अगर देखेंगे ठीक से, ड्रॉ करेंगे एक बार वापस, तो इस तरह से कुछ डायग्राम हमको दिखाई दे रहा है वो. ठीक है. इसमें ये इस तरह से है. ठीक है. इट्स ओके, इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एक्चुअली, बट इट्स ओके. ओके. तो अभी यहाँ पे देखो ए के ऊपर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऐसा आएगा, बराबर, और उसका जो स्लोप है वो नेगेटिव रहेगा क्योंकि इट इज डिक्रीजिंग देयर. हियर एट बी पॉइंट पे अगर हमने स्लोप ड्रॉ किया,
या टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस तरह से आएगा, and its slope will be positive because it is making an angle theta which is acute with the positive direction of x-axis, and that's why this point B is the only point where the slope is going to be positive and that is maximum also. Even at the C point अगर देखेंगे ठीक से तो ये point C पे क्या हो रहा है, tangent will be horizontal like this. Okay, so since the tangent is horizontal, its slope is going to be 0, and since the slope is 0, we cannot call it as a maximum. Okay, and here it is D here. तो D पॉइंट पे क्या हो रहा है, देखो फिर से स्लोप जो है वो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव स्लोप रहेगा यहाँ पे, क्योंकि द ग्राफ इज डिक्रीजिंग एट दैट पॉइंट. तो जहाँ पे ग्राफ डिक्रीजिंग होता है स्लोप नेगेटिव रहता है. तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी नेगेटिव है. तो बचा कौन, ये पॉइंट बी ही ऐसा है जहाँ पे स्लोप पॉजिटिव भी है और मैक्सिमम भी है. तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट रहने वाला है. ओके, चलो नेक्स्ट वन. See this here. The value of 1 plus 25 the whole raised to 5 is. How will you get this value? ये तुमको बाइनोमियल थ्योरम जो मैथमेटिक्स के अंदर हुआ है तो वो हमको यूज करना है यहाँ पे, बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है ना, which tells us this simply that 1 plus x the whole raised to n के लिए एक्सपांशन होता है वो. तो लेकिन इसमें क्या है ना कि एक इसका बाइनोमियल थ्योरम का अप्रोक्सीमेशन भी हमको यूज करना पड़ता है. देखो यहाँ पे अगर 1 plus x raised to n इस टाइप का अगर एक्सप्रेशन होता है तो उसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करके इस तरह से लिख सकते हैं 1 raised to n. दिस विल बी द फर्स्ट टर्म प्लस nc1 into 1 raised to n minus 1 into x raised to 1. करेक्ट है. प्लस here it will be the second term, that is nc2 into 1 raised to n minus 2 into x raised to 2. That's it, and so on up to dash dash dash. ओके, तो लास्ट तक इस तरह से हम देखते रहेंगे जाएंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे इसके अंदर x raised to 1 आएगा, इस टर्म के अंदर x raised to 2 आएगा, नेक्स्ट टर्म के अंदर x raised to 3 आएगा, एंड सो ऑन लाइक दैट अप टू द n. So in general you can see this can also be written as, देखो 1 plus x the whole raised to n can be written as 1 raised to n को हम लिख सकते हैं 1 plus nc1 को लिख सकते हैं सिंपली n, और 1 का एनी पावर 1 ही होता है, बाकी x raised to 1 becomes x only, plus here it is going to be nc2 which is going to be n into n minus 1 upon 2 as it is, and 1 का कोई भी पावर 1 ही होता है, और x square will be kept as it is this way here. So in general we can say that the binomial theorem or binomial theorem can be written like this. There will be only two terms if the higher powers of x are negligibly small. Then in that case we can just consider the two terms in this way. इससे भी आगे जाके अगर x का जो वैल्यू है वो अगर बहुत बहुत छोटा है 1 से, तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि x square will also be negligible. So x square will also be nearly equal to 0, and in that case we can just neglect this third term also. And when this third term is also neglected, what we can say is this will be 1 plus x the whole raised to n is approximately going to be equal to 1 plus nx only. This is actually called as the binomial approximation, and we have to remember this correctly. ठीक है, ये जो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है तो वो हमको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत काम में आता है. हमको फिजिक्स के अंदर कई बार ये हमको यूज करना पड़ता है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव 1 प्लस x होल रेज टू 2, तो वी कैन राइट इट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस 2x. इट्स दैट सिंपल. तो ये जो 2 है वो सिर्फ सीधा सामने आ जाएगा बिल्कुल, but this will hold true only when x is very 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 small than 1. ये याद रखो, नहीं तो कभी भी नहीं यूज करना है ये. तो ये कंडीशन उसके लिए है, याद रखो ठीक से. ठीक है, दिस इज द कंडीशन. ओके, even if we have this 1 plus x the whole raised to 3 can be approximately written as 1 plus 3x in general, and hence we can also use this when x is going to be less than 1. Even अगर सपोज हमारे पास रूट ऑफ 1 प्लस एक्स है
देखो लिख से how can we write this root of 1 plus x? The root of 1 plus x can be actually written as 1 plus x the whole raised to half, right? But if we use this binomial approximation, then we can write this as 1 plus simply half x. Correct hai? So this is the binomial approximation we have to consider. Okay. Even इससे भी आगे जाके अगर हमारे पास 1 upon x raised to 1 upon root of 1 plus x है, अगर ऐसा है 1 upon root of 1 plus x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं 1 upon 1 plus x the whole raised to 2, और उससे भी आगे जाके इसको लिख सकते हैं 1 plus x the whole raised to minus 2, and then in that case in the next step we can have this to be approximately equal to what? So it will be 1 minus 2x. It's that simple. So in this way we can get the binomial approximation. And now if we use this here, तो यहाँ पे जो example में हमको दिया हुआ है कि 1 plus 1 upon 25 the whole raised to 5. How will you get that? अब देखो 1 upon 25 can be written as 0.04, correct है? So we can say this will be 1 plus 0.04 the whole raised to 5. And since this 0.04 is very small than 1, so we can use the binomial approximation here and simply get it approximately equal to 1 plus 5 times of 0.04, which happens to be actually 1 plus, अच्छा अभी 0.04 multiplied by 5 कितना बनता है? It becomes 0.2 actually, and hence we can get this as 1 plus 0.2, which is actually going to be 1.2. Okay, if you want we can also find out the third term here. तो ये थर्ड वाला टर्म जो है वो भी हम निकाल सकते हैं, अगर एक्यूरेट आंसर चाहिए हमको तो वो भी हम निकाल सकते हैं आराम से. वो कितना आएगा बताओ? तो वो आएगा, अब यहाँ पे 5 जो है ना, तो n मतलब 5 है, राइट? तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 1 मतलब 4 अपॉन 2 इंटू x का स्क्वायर, बट x इज गोइंग टू बी 0.04, राइट? तो इफ वी स्क्वायर दिस 0.04 then we can be able to get it as 0.0016, बराबर? And if we just cancel this out, then we can get this 2 ones are 2 twos are and 5 twos are 10, and 10 multiplied by 0.0016 comes out to be 0.016, and hence it can be written as 1.216. Actually this is going to be the accurate answer, but we don't want that much accuracy. We want this 1.2 only as a final correct answer. ठीक है, तो दो टर्म्स भी अगर ले लेंगे तभी भी हमको काफी एक्यूरेट आंसर मिल जाता है अगर x sufficiently small है तो. ओके, चलो नेक्स्ट वन. See this fourth question here. The value of sin 80 into cos 40 plus sin 40 into cos 80 is. अभी आपको पता होगा, अपने किया रहेगा मैथ्स के अंदर, sin A into cos B plus cos A into sin B. ये किसका फॉर्मूला होता है? ये एक्चुअली sin ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला हुआ करता है, करेक्ट है? तो अब यहाँ पे इसको सामने रख के देखो तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, sin 80 इंटू cos 40 बराबर प्लस यहाँ पे क्या है cos of 80 and that is multiplied by sin of 40. So this will turn out to be sin of 80 plus 40, correct है? So what is this 80 plus 40? It comes out to be 120, and as we know that this sin of 120 is going to be actually sin 180 minus 60, and as we know that sin 180 minus 6 theta is going to be sin of theta, and hence you can get this as sin 60, which is actually going to be root 3 by 2, and root 3 by 2 is going to be actually the final answer. So here 2 will be the correct option here. Okay, चलो next one. sin 53 is going to be 4 by 5. ये वैल्यू याद भी रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है. sin 53 का वैल्यू 4 by 5 होता है, ये अच्छी तरह से याद रखो.
तो cos 53 कितना होगा? Actually we have that cos 53, cos square 53 will actually be equal to 1 minus sin square 53, बराबर? And because of that we can get this 1 minus sin square 53 मतलब कितना? तो वो आएगा 4/5 का होल स्क्वायर, जो बनेगा 1 minus 16/25, जो बनता है 25 minus 16 मतलब 9/25. And hence this is, since this is cos square 53, so we can get this cos 53 only to be simply the square root of this. तो 9/25 का स्क्वायर रूट कितना बनता है? 3/5 बनता है. So this 3/5 must be the correct option. So 3 is going to be the correct option. Even not required this sin square theta plus cos square theta equal to 1. ये फॉर्मूला ही यहाँ पे लगाना जरूरी है ऐसा नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे ट्रायंगल यूज करके भी ये सॉल्व कर सकते हैं. देखो, if we use this triangle and have this angle to be 53 here, ये 53 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर sin 53 इक्वल टू 4/5 है, तो इसका मतलब सीधी बात है कि ऑपोजिट साइड 4 होगा और हाइपोटेनियस 5 होगा, नो डाउट. तो यहाँ पे ये जो थर्ड साइड है वो कितना होगा? अगर x मान लेते हैं तो हमको मिलेगा 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मतलब 5 स्क्वायर, which gives that 16 plus x square is equal to 25, means x square must be actually equal to 9 and x becomes equal to 3. And since x becomes equal to 3, we can easily find out cos of 53, because cos 53 is nothing but adjacent upon hypotenuse, which becomes 3/5, and that's it. So in this way we can get the final answer by another method. Yes. Next one. Okay. Find the value of log of 32 to the base 10. तो अभी देखो, और इसमें दिया हुआ है कि log of 2 to the base 10 is given to be 0.3. So see here, log of a raised to n, उसके लिए एक फॉर्मूला है, याद रखो, n times of log of a. ये फॉर्मूला याद रख लो ठीक से. तो अब यहाँ पे हमको log of 32 to the base 10 हमको निकालना है. Here 32 can be written as a power of 2, करेक्ट है? 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 raised to 5 लिख सकते हैं, बराबर? एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये n जो है वो सामने आके जंप करता है इधर. यहाँ पे जो n होता है तो वो यहाँ पे सामने आ जाता है कि नहीं? तो ये बात यूज करके हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? तो हमको मिलेगा ये 5 जो है वो सामने आ जाएगा इधर. इससे हमको मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ log of 2 to the base 10, which is actually going to be 5 into, यहाँ पे देखो log of 2 to the base 10 कितना दिया हुआ है यहाँ पे? ये देखो, ये 0.3 उसका वैल्यू दिया हुआ है. तो वो अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा 0.3. एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस 5 विद 0.3, देन यू कैन गेट दिस 1.5 as a final answer, which is going to be there in option number 1. Okay, let us see the next one. Yes, find the sum of the series 1 plus 1/3 plus 1/9 plus 1/27 and so on like that up to infinity. Okay, up to infinity बोला हुआ है. तो देखो, if we have a sequence like ar square, ar cube and so on up to infinity, then this sequence is called as a geometric progression, GP उसको हम बोलते हैं. And when r is going to be less than 1, in that case the sum to infinity actually happens to be a upon 1 minus r. ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रख लो, ठीक है? If mod of r is actually going to be less than 1, then in that case sum to infinity of these terms will become equal to a upon 1 minus r, where a stands for first term in this GP and r stands for the common ratio of this GP. Okay, so if we compare this here, then we can be able to find a and r. Since we have to find out this 1 plus 1/3 plus 1/9 plus 1/27 and so on like that up to here. तो इसमें a कौन है? 1 है, और r कौन है? 1/3 है. तो ऐसे केस में सम टू इन्फिनिटी कितना मिलेगा हमको? तो सम टू इन्फिनिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है a upon 1 minus r.
तो अगर यहाँ पे हम डाल देंगे सारे वैल्यूज तो a के बदले आएगा 1 और 1 माइनस r के बदले आएगा 1/3, जिससे हमको मिलेगा, इसको अगर सॉल्व करते हो आगे तो देखो हमको क्या मिलेगा, s infinity is actually going to be equal to 1/2/3 and 1/2/3 happens to be actually 3/2, and this is actually going to be the final answer, which is there already in the option number 2 here. Yes, then again it is tan 90 plus theta, it is ready made formula, tan 90 plus theta, 90 plus theta मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में ASTC के हिसाब से सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है, बराबर, तो tan ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, तो इसलिए tan नेगेटिव होगा, और एट द सेम टाइम यहाँ पे 90 मल्टीपल है, इसलिए यहाँ पे 90 होने की वजह से यहाँ पे कॉट आएगा, तो इससे हमको पता चलता है कि tan 90 plus theta is actually going to be minus of cot theta. So this is minus of cot theta, which is going to be there in this final answer. So 2 will be the correct option. Okay. अभी देखो 10th वाला क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे, उसके लिए एक थोड़ा सा मैं थ्योरी बताता हूँ आपको कि डेरिवेटिव का एक स्पेशल यूज है, ठीक है, टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, टू फाइंड मैक्सिमा बोलते हैं उसको, मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है। तो होता क्या है ना कि अगर कोई भी फंक्शन या कोई भी एक इक्वेशन जो है y इक्वल टू, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ भी है कि x स्क्वायर या माइनस 2x प्लस 3, ऐसा एक इक्वेशन है, और ये इस टाइप का उसका ग्राफ बनता है, तो ये देखो ऐसा ग्राफ है उसका, ठीक है। तो अभी इस ग्राफ में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सबसे मिनिमम है, राइट, मिनिमम। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे वो मिनिमम है, तो उसके लिए ये होता है कि उस पॉइंट पे अगर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट का स्लोप 0 बनेगा, मतलब वहां, और टेंजेंट का स्लोप मतलब ही क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, तो इसलिए डेरिवेटिव जहाँ पे 0 बनता है वो वैल्यू ही वहां पे मिनिमम पॉइंट कहलाता है। तो याद रखो ठीक से, इफ वी यूज दिस हियर देन वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन हियर। तो इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको मिलेगा 2x माइनस 2 कॉन्स्टेंट आउट, x का डेरिवेटिव 1 तो 2 एंड प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, तो ये बनता है डेरिवेटिव dy by dx that is equal to 2x minus 2. Okay, but we want to find out the value of x at which this y will become minimum. उसके लिए हमको क्या करना है, सिंपली डेरिवेटिव को 0 के साथ इक्वेट करना है। So derivative will become 0, that means 2x minus 2 will become equal to 0 only when 2x will become equal to 2, which gives x is going to be equal to 1. तो x इक्वल टू 1 ये पॉइंट है जहां पे वो 0 बनता है। अब ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया, अगर हम यहाँ पे जो पूछा हुआ क्वेश्चन है तो वो अगर हम सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं तो हमको मिलेगा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x, ओके, एंड वी वांट टू फाइंड आउट इट्स मिनिमम वैल्यू, राइट। तो वो उसके लिए हमको पता है ऑलरेडी कि dy by dx हमको निकालना पड़ता है, डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। इफ यू फाइंड आउट द डेरिवेटिव हियर देन 2 इज अ कांस्टेंट एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है 2x माइनस 4x, तो 4 is constant out and derivative of x is going to be 1. So if we solve this further then we get this 4x minus 4, and this is going to be actually the derivative. But what we have to do is we have to find out the minimum value of y, and y will be minimum only when dy by dx is going to be 0. तो dy by dx को अगर 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो dy by dx equal to 0 gives 4x minus 4 is equal to 0, which gives 4x is equal to 4, which gives x is equal to 1, and this is the value of x at which the y becomes minimum. Yes. And 11th one, the given plot shows the variation of y with respect to x. What is the slope of this line? So we know that if a line makes an angle theta with the positive direction of x-axis, then slope of the line is going to be tan theta. Okay, तो इसलिए फिर यहाँ पे जो है वो tan theta हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर हम करेंगे तो हमको स्लोप मिलेगा सिंपली tan of 60, and as we know that tan 60 is going to be root 3, so the slope of this line will be root 3, and that's it.
Again, cos of 120. We know that cos of 120 is simply can be found out by using the fact that देखो cos of 120 can be written as 180 minus 60, and as we know that cos of 180 minus theta is going to be minus of cos theta, तो यहाँ पे हमको मिलेगा minus of cos 60 which is going to be minus of half. That's it. Okay. अब इसमें देखो ये जो स्टेटमेंट्स है, 4 स्टेटमेंट्स हमको दिए हुए हैं, तो इसमें ऐसा है कि देखो अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो उसमें हमको यहाँ पे एक मार्क करना है, एक ऑप्शन मार्क करना है. अगर असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट नहीं है, मतलब वो उसकी वजह से वो असर्शन होता है ऐसा नहीं है, तो ऐसे केस में हमको 2 उसका मार्किंग करना है. और तीसरा जो है तो वो ये है कि assertion is true but reason is wrong, then we have to mark 3 as a correct option. and चौथा जो है तो वो तब जब both assertion and reason both are false, then we have to mark this 4. तो अभी देखो यहाँ पे the value of log of 1 to the base 10 is 0. तो देखो ये जो है log of 1 to the base 10 is equal to 0. क्यों? क्योंकि log का definition क्या होता है? If we say that log of x to the base b is going to be a, तो इसका मतलब ये होता है कि b raised to a must be x. Okay, तो अभी यहाँ पे log of 1 to the base 10 is 0 because 10 raised to 0 is equal to 1. तो यहाँ पे देखो assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ये रीजन इस assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा. 1. ये आपको 12th में करना है एक्चुअली, ये 15th वाला देखेंगे. चलो, द इक्वेशन x square minus x plus 1 equal to 0 has 2 real roots. ओके, तो x square minus x plus 1 equal to 0, इसको 2 रियल रूट्स है क्या? बिल्कुल नहीं. देखो अगर इसका b square minus 4ac निकालो तो कितना आता है? b square minus 4ac it will be minus 1 का स्क्वायर minus 4 into a मतलब 1 into c मतलब 1. ठीक है, तो यहाँ पे वो आएगा 1 minus 4 which is going to be minus 3 which is negative. And whenever the b square minus 4ac is negative, what does it mean? The roots are imaginary, not real. Okay, the roots are imaginary. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? It has 2 real roots, but that is not true. So therefore assertion itself is false. And the quadratic equation has always 2 real roots. ये भी false है, because quadratic equation can have imaginary roots also, need not to have real roots only. तो इसलिए दोनों करेक्ट नहीं है, दोनों इनकरेक्ट है, तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन 4 आएगा. चलो ठीक है, 16th वाला देखो, द वैल्यू ऑफ sin x dx का इंटीग्रेशन कितना बनेगा बताओ? इट्स रेडीमेड फॉर्मूला ओनली. Already we have learned last time that the integration of sin x dx is actually minus of cos x, करेक्ट है, प्लस c, ये उसका फॉर्मूला है, तो इसलिए फिर यहाँ पे माइनस ऑफ cos x, ये उसका फाइनल आंसर आ जाएगा. चलो ठीक है, इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन ऑफ integration of x into dx from 1 to 4. How will you solve this? तो देखो integration of x is going to be x square upon 2. According to the formula, integration of x raised to n is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1. करेक्ट है, तो यहाँ पे x मतलब क्या है? यहाँ पे x मतलब यहाँ पे x raised to 1 है, तो x raised to 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x raised to 1 plus 1 upon 1 plus 1 मतलब ये x square by 2, and that is from 1 to 4.
तो यहाँ पे पहले हमको 4 डालना है, इधर भी x दिखता है ना, वहां पे पहले 4 डालना है, तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जहां पे भी x दिखता है फिर से वहां पे 1 डालना है इधर, तो 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 स्क्वायर अपॉन 2 एंड हेंस वी कैन गेट दिस एज 4 का स्क्वायर कितना बनता है वो 16, तो 16 by 2 minus 1 by 2, how much it is 15 upon 2, which is going to be the final answer, which is already there in the option number 2 here. Next, the value of integration of 1 upon x is integration of 1 upon x dx is actually log x. ये फॉर्मूला है, याद रखो log of x to the base e, and log x to the base e को ही कभी कभी ln of x ऐसा भी लिखते हैं, याद रखो इसे, whenever we get this log of x to the base e it is called ln, नेपेरियन लॉगरिथम बोलते हैं उसको, नेपेरियन लॉगरिथम, ठीक है, याद रखो ठीक से। चलो सो यहाँ पे 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, नो डाउट। नेक्स्ट वन हियर, द इंटीग्रेशन ऑफ cos of pi, sorry, cos of x dx from 0 to pi. How will you solve this? See here, the integration of cos x dx from 0 to pi. First of all, you have to find out the integration of this cos x. What is it? We have already learned the formula that integration of cos x is going to be simply sin x. And if we carry out it from 0 to pi, then we'll have to put pi here first and then 0 here instead of x here. So that we get this as sin pi minus sin 0, and sin pi is already 0. So 0 minus sin 0 is again 0. So 0 minus 0 is 0, which is going to be there in this option number 1. Okay. The next one, question number 20. Solve this. Integration of t square minus 2t plus 3 dt. Okay, how will you get this integration? तो उसके लिए हमको ये करना होगा कि इंटीग्रेशन सबसे पहले सेपरेट करना होगा तीनों टर्म्स के लिए। तो देखो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने सबसे पहले किया प्लस सॉरी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt और फिर लास्ट में इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू डी टी ओनली। ओके, इसमें से ये जो कॉन्स्टेंट्स है तो वो हमको बाहर लेने होंगे। तो देखो टी स्क्वायर डी टी प्लस सॉरी माइनस 2 constant out and integration of t dt kept as it is plus 3 is constant again out and dt only will be left inside. Okay, so the next step will be here t square का integration क्या होगा? As we have the formula for integration of x raised to n is actually x raised to n plus 1 upon n plus 1. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे क्या आएगा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी रेस टू 2 plus 1 अपॉन 2 plus 1 मतलब ही टी रेस टू 3 अपॉन 3, करेक्ट है, माइनस 2 एज इट इज। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टी रेस टू 1 हियर अकॉर्डिंग टू द सेम फॉर्मूला इट्स गोइंग टू बी टी रेस टू 1 plus 1 मतलब 2 अपॉन 1 plus 1 मतलब अगेन 2, तो इसलिए यहाँ पे और प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी ओनली इज एक्चुअली गोइंग टू बी टी, याद रखो। तो इससे हमको ये मिलता है सिंपली ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा हमको, देखो टी क्यूब बाय 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3t विच इज ऑलरेडी देयर इन दिस ऑप्शन नंबर 1। चेक टी क्यूब बाय 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस c which is already there in this option number 1, that is correct one. Yes, chalo next one, which of the following is equivalent to 1.05 raised to 5? How will you get that? 1 plus, see here 1.02 can also be written as, how can I write this, 1 plus 0.02 ऐसा लिख सकते हैं इसको। and if we use the binomial approximation just we have learned now, तो 1 plus x raised to n equal to क्या होता है, approximately 1 plus nx होता है। तो इसलिए यहाँ पे आएगा 1 प्लस ये 5 जो है वो सामने आ जाएगा इधर,
इससे बनेगा वो 5 into 0.02 and hence we can say this will be 1 plus what is this 5 into 0.02, it is 0.1 and hence it comes out to be 1.1 as a final, which is already there in this option number 1. हे निघाले से माइक अनम्यूट मत करो प्लीज. असं श्रद्धा, काढायला गेलं किती महत्वाचं श्रद्धा, बरं दिलं पण okay. If you have any doubt, then just unmute your mic and please ask. Okay, which of the following graph represents the equation 1 upon y equal to 1 upon x? अभी देखो y equal to 1 upon x, इसका ग्राफ कैसे आएगा? ये देखो, suppose we have this x axis, y axis, तो 1 अगर यहाँ पे x equal to 1 डाल देंगे तो 1 upon 1 कितना आएगा? 1 ही आएगा. ठीक है, तो 1 का इमेज 1 बन गया. ठीक है, 2 का इमेज क्या आएगा? 1/2 मतलब 0.5, थोड़ा कम हो गया वो. 3 का इमेज 1/3, 4 का image 1/4 and so on like that, it will go on decreasing this way. And 0.5 का image 2 आएगा यहाँ पे, 0.1 का image 10 आ जाएगा. So in this way the graph will be like this, decreasing one. Okay, but it will never touch this y-axis, remember, and neither it will touch this x-axis here. Even in the negative side also it will be like this. ठीक है, तो negative side में भी ऐसा ही आएगा वो graph. ठीक है, so let us check the options. Yes, fourth one is going to be the correct option here. Okay, chalo next one. If y is equal to 4x minus x square, then maximum value of y occurs at. Yes, अब ये भी जब जैसे हमने देखा था कि मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, मैक्सिमम या मिनिमम दोनों वैल्यूज कभी मिलते हैं हमको जहाँ पे उसका डेरिवेटिव 0 बनता है. तो if suppose we have this y is equal to 4x minus x square and we want to find out the maximum value, so graph will be maximum only when the tangent will become horizontal. And tangent horizontal बनने का मतलब ही क्या है? Slope of tangent becomes 0, that means the derivative becomes 0. तो derivative 0 होना यही कंडीशन है मैक्सिमा या मिनिमा के लिए. तो इसलिए यहाँ पे सिंपली डेरिवेटिव निकालना होगा हमको, dy by dx which goes to be 4 into x का डेरिवेटिव 1 हो गया माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि 2x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x and this is going to be the derivative of y with respect to x. But as we want to find out the maximum value of y occurs at, तो उसके लिए हमको dy by dx को 0 के साथ इक्वेट करना पड़ेगा, जो बनेगा 4 minus 2x equal to 0, जिससे हमको मिलेगा 4 is equal to 2x and hence we get that 2x must be equal to 4, मतलब ही x must be equal to 2. So x equal to 2 is going to be the value of x where y becomes maximum. Okay, this question, 24th question, is just based on the concept just we have seen last time. कल हमने एक कंसेप्ट देखा था. देखो, अगर सपोज एक ग्राफ हमारे पास है, इस टाइप का अगर ग्राफ है, तो उसका नीचे का जो एरिया होता है x1 से लेके x2 तक उसका एरिया, तो वो हमको मिलता है इंटीग्रेशन से. ये पूरा जो एरिया है कि नहीं, ये एरिया हमको मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ y into dx from x1 to x2. This is the basic concept. Okay, remember this correctly. और at the same time ये भी अच्छी तरह से याद रखो कि अगर ऐसा है, अगर ग्राफ सपोज ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक वैल्यू हमने ड्रॉप किया है y1, उसको हम बोल सकते हैं, और ये एक दूसरा वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे y2, उसको बोल सकते हैं. और ये एरिया अगर हमको चाहिए सपोज, ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया एट द लेफ्ट ऑफ एनी कर्व, then we can find it out as integration of x dy from y1 to y2. फर्क समझ में आया दोनों में ठीक से? What is the difference between these two? See here, this is the area under the curve, okay, and here we are going to find out the area at the left of the curve. Okay, whenever we are finding the area at the left of the curve, we have to integrate
x with respect to dy. And whenever we are going to find out the area under the curve, we have to integrate y with respect to dx. And in that case, limits will be value of x. And here it will be the limits will be the value of y. Remember. Next one. Yes, the given plot shows the variation of y with respect to x. Find the slope of the line. How will you find the slope of line? Slope of a line is always going to be the tangent of inclination. Since the if suppose line is like this, then the angle made by this line with the positive direction of x-axis is called as inclination, right? And if that angle is theta, then the slope of the line is found out to be tan theta. ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है, ये बात याद रखो ठीक से. तो अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको, तो देखो ठीक से यहाँ पे ये एंगल 45 दिया हुआ है. अगर ये एंगल 45 है तो ये कितना रहेगा? जरूर 135 रहेगा. और ये एंगल 135 होने से हमको मिलता है m इज इक्वल टू tan थीटा एंड थीटा इज 135. सो व्हाट इज tan 135? It is going to be tan of 180 minus 45. And as we know that tan 180 minus theta is going to be minus of tan theta. So we get this minus of tan 45. And hence we get this as minus of 1. And this is going to be actually the final answer, which is available in option number 2 here. Yes. Next one, 26th question. Just check. Okay, integration of 2 upon x from 2 to 4 dx. How will you find it out? हमको पता है 2 is a constant, so it can be taken out and we can get this integration of 2 upon x dx, and that is from 2 to 4. Okay, sorry, 2 नहीं आएगा ना यहाँ पे. Yes, अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो हमने अभी भी देखा था, log x. याद है? तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा log of x and obviously to the base e, and that is from 2 to 4. And if we just simplify this further, then we get this log of 4 to the base e minus log of 2 to the base e, so that we get this. अब ये तुमको पता होना चाहिए कि log of a minus log of b happens to be log of a upon b. ये करेक्ट है? तो ये अगर पता है तो इसको हम लिख सकते हैं आराम से आगे कि 2 into this will be actually log of 4 upon 2, and that is to the base e here. And since we have this 2 as it is and 4 upon 2 मतलब 2 बनता है, तो इसलिए वो बन जाएगा 2 times of log of 2 to the base e. Yes, 2 times of log of 2 to the base e will be the correct option. ओके, तो ये बाकी सब जी पे क्वेश्चंस जो है वो भी उसी टाइप के हैं, सिमिलर ही है, so we can just leave them as it is. Okay, so I declare here that this chapter has been finished. Okay, mathematical methods in physics यहाँ पे खत्म होता है. ठीक है, तो वेक्टर, इसमें वेक्टर्स जो है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसका थोड़ा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो. और ठीक है, सो लेट अस फिनिश दिस चैप्टर हियर. नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में हम मोशन इन प्लेन ये चैप्टर के ऊपर एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, मतलब मोशन इन प्लेन का जेईई नीट का लेक्चर स्टार्ट करेंगे. ठीक है.